अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, आपको हम्म एंगर इश्यूज हैं, तो मेक हम्म श्योर दैट यू सपोर्ट योर लिवर बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम यू. इनफैक्ट पता है मेरी डॉटर थर्ड ग्रेड में उसको पढ़ाया गया है. आई वाज Yeah. शॉक्ड टू सी कि ये तो यार हम लोग को ट्वेल्थ में ग्रेजुएशन में मैंने पूरी बायो पढ़ी है, मैंने कभी नहीं पढ़ा. उसके यहाँ ये पढ़ाया गया है कि कौन सा ऑर्गन किस इमोशन से कनेक्टेड है. आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हर. Have you ever had these wake up calls between 1 to 3 a.m.? हमारी बॉडी में भी ना हर ऑर्गन का एक टाइमलाइन होती है टू फंक्शन एंड टू डिटॉक्सिफाई. सो लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन टाइम है रात को 1 बजे से लेके 3 बजे. So if your liver is highly active, you're going to get wake-up calls. So make sure that you have bright sunlight in the morning, you eat your early dinners, you do not snack in midnight so that your liver is being supported and loved. Hello sassy nari or welcome to a fresh episode of Little Fixes, जहां हम बात करते हैं उन चीजों की जो हर रोज की लाइफ में छोटी लग सकती हैं लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं. We bring little fixes because life's a lot and so are we. So when was the last time you thought about your liver? Unless you've been on a juice cleanse or या फिर आपको हमेशा tiredness feel होती रहती है. Probably never. But turns out our liver is doing a lot of heavy lifting behind the scenes. From managing hormones to filtering toxins to handling all the extra sugar we casually snack on. This organ is basically our internal multitasker. And the truth is that more and more people are being diagnosed with fatty liver, even if they do not drink and they are eating healthy. अब त्योहार आ रहे हैं और शादी का सीजन भी, so it's the perfect time to start working on your liver health. छोटे छोटे तरीकों से शुरू करते हैं और इसमें आज का एपिसोड आपकी बहुत हेल्प करेगा. In this episode, I have Integrative Nutrition Health Coach Poonamm Kasat, who knows how to keep things real. We talk about why liver health deserves way more attention, how fatty liver is becoming common, what it actually means to have the hepatitis B antigen in your body without being sick, and most importantly, कैसे अपने liver health को optimize कर सकते हैं for our overall well-being. No scare tactics, no juice cleanse talk, just practical tips, solid info, and some surprising truths that might change how you eat and live starting today. Let's get into it. Also, please help me bring more such conversations to you. Subscribe to Little Fixes on YouTube and follow the podcast on your podcast app. Hi Poonamm, welcome to Little Fixes. Hi, good to see you. वेरी हैप्पी टू हैव यू. जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा कि लिवर के बारे में क्या बात कर सकते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. एंड लिवर जो है काफ़ी टाइम तक काफ़ी इग्नोर्ड रहा है और अब मुझे लगता है जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं लोगों के साथ, लिवर काफ़ी फोकस में आ रहा है. इनफैक्ट व्हेन आई आस्क्ड अबाउट इट, अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि फैटी लिवर के बारे में पूछना. समवन सेंड मी अ मैसेज कि ये बताओ कि ये फैटी लिवर अचानक से इतना ट्रेंडिंग क्यों हो गया है. तो आई थॉट अबाउट इट कि हाँ, कहीं ना कहीं सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट नाउ. तो अ, जो ये लिवर हेल्थ है वो इतना क्रूशल क्यों है? हमें क्योंकि ये भी समझना है आपसे कि लिवर एक्चुअली में क्या करता है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है. जैसे 10th ग्रेडर भी नहीं, अभी तो मेरी थर्ड ग्रेडर है, उसको भी लिवर पढ़ा दिया गया है. तो Sure, उसके sure, हिसाब sure. से आप बताओ. Yes, of course. लिवर ट्रेंडिंग में क्यों है? पहले तो let's understand this. हम्म So our body works in a sync. So whether it's your brain, gut, or liver, so everything needs focus. Abhi, we have talked a lot about gut. There is a lot of information which has been floated about the gut, right? So once we are, now all of us have that big knowledge about gut. Abhi, second option kya hai hamare paas? Liver. So now, right now, the knowledge is not enoughly spread about the liver, isliye people are talking more about liver. But that doesn't mean that only liver is important, only gut is important, only brain is important. Everything works in a cycle and a sync. So each organ has its own role and is equally important. Now, when we are talking about what exactly liver does, so liver is like a detoxifying machine. अभी सपोजिंगली ऐसे समझ लो कि अगर हमारी बॉडी किचन है तो लिवर इज आर डिश वॉशर, लिवर इज आर शेफ एंड लिवर इज ऑल्सो द क्लीनिंग क्रू. सो लिवर करता क्या है? लिवर
metabolizes your hormones, whether you talk about insulin, whether you talk about estrogen, whether you talk about what do you say, cholesterol. So it Mhm. metabolizes your hormones. It produces bile to digest the fats. Correct. तभी fat good or bad हम खाते हैं. It is the duty of liver to actually break it down. So basically, whatever you eat, the liver's function is to break it down and make it into a usable form for absorption by all other parts of the body. So do you Mhm. understand? It's like a multitasker. So that's what हुँ, liver is exactly doing. ओके, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें बता दी और जैसे अभी कोलेस्ट्रॉल का इश्यू भी लोगों में बहुत दिखने लग गया है और आप बोल रहे हो कि वो भी लिवर का ही काम है, उसको कैसे मैनेज करना है, सब चीज़ें हैं। और फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल लाइक ये 2 अलग चीज़ें हैं, पर हैं क्या? किस तरीके से लिवर से कनेक्टेड हैं? और हाँ, एक चीज़ और है कि फैटी लिवर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर पहले तो यही होता था कि जो ज़्यादा ड्रिंक करता है, अल्कोहल लेता है, उसमें होता है, पर अभी ऐसा नहीं रहा है। तो दोनों चीज़ें अब मैं आपसे समझनी है पूनम। ऑफ कोर्स, चलिए लेट्स बिगिन फ्रॉम लिवर. अभी हमको पता चल गया हुँ, एग्जैक्टली लिवर करता क्या है. हुँ, नाउ we have two issues which is rising at a very alarming rate in India. So India is becoming a capital of especially non-alcoholic fatty liver. So हम हुँ, डिवाइड हुँ, करते हैं लिवर को दो डिजीज में, फैटी लिवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर. वेरी हुँ, सिंपल, द वर्ड एक्सप्लेन्स इट. फैटी लिवर यूजुअली होता है ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से. नाउ हुँ, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, अब हम समझे कि अल्कोहल नहीं पी रहे हैं तो कैसे हो रहा है, लाइक व्हाई, हाउ इट इज हुँ, कमिंग इनटू द पिक्चर. नाउ what are the things which are leading to this? So I would like to tell, जैसे हमारी sedentary lifestyle हुई, eating too much of sugar. Now, sugar in the form of fructose, that is in the form of कि हम sports drink पीते हैं, smoothies पीते हैं, flavored yogurts खाते हैं, granola खाते हैं, हम low fat packaged food, but we don't realize behind the label there is lot of added sugar in it. So, हाँ, हाँ, these forms of sugar, when they get into your system, it overwhelms your liver, क्योंकि liver का क्या काम है, उसको break down करना एंड बॉडी के थ्रू भेजना, एंड जो एक्स्ट्रा होता है वो अपने अंदर फिट कर लेना. नाउ बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग दीज थिंग्स इनटू योर बॉडी, द लिवर इज गेटिंग ओवरवेल्म्ड. ये जो हुँ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है फैट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, फैट सेल्स में जा रहे हैं, लेकिन वो फिल हो चुके हैं. सो नाउ व्हाट विल लिवर डू? ही इज गोइंग टू कीप ऑल द फैट इनसाइड इटसेल्फ बिकॉज इज गोइंग टू स्टोर इट, एंड दैट इज फैटी लिवर. जब फैट्स आपके सेल्स में स्टोर हो जाएंगे, लिवर सेल्स में, that is exactly what fatty liver is. Now, the two reasons we have understood, alcohol is one of the reasons for normal fatty liver, and non-alcohol is because of high sugar intake and the lifestyle, as I ओके। told you. ओके। तो पूनम शुगर तो पहले भी खाते थे लोग लेकिन अभी यू फील कि ज़्यादा खाने लगे हैं बिकॉज़ हमें हेल्दी का जो वाइट वॉशिंग है, हेल्थ वॉशिंग है, जो भी है, वो कर दिया गया है। पहले हम लोग घर का कभी हलवा बन गया या कुछ लड्डू मिठाई बन गया, इस तरीके का थोड़ा लिमिट में रहता था, बट कई बार ऐसा होता है शायद कि हम लोग हेल्दी खाने के चक्कर में भी एक्स्ट्रा शुगर खा जाते हैं और आई थिंक प्रोसेस्ड फूड खाना भी बहुत कॉमन हो गया है। तो लोग बाहर से हेल्दी दिखते हैं एंड आई एम सरप्राइज्ड टू सी कि उनको फैटी लिवर होता है। हाँ, so this syndrome is called skinny fat. मतलब आप हुँ, बाहर हुँ। से तो एकदम स्किनी एंड लीन रखोगे, बट अंदर से आपकी मेटाबॉलिकली यू आर क्वाइट इम्बैलेंस्ड. अगेन, द हुँ, लिवर एंड द गट, दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, सो यू आर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन व्हाट यू आर हैविंग. एंड एज यू हुँ, सेड राइट नाउ कि पहले भी तो हम शुगर खाते थे, बट पहले जब भी हम शुगर खाते थे हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी होती थी. इफ यू सी अ ग्रेट ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, डू यू सी हाउ दे यूज टू वर्क, दे यूज टू वॉक डाउन टू हुँ, देयर हुँ, वर्क, दे यूज टू टॉयल. मतलब घर का काम भी सब खुद करते थे. तो यू सी द फिजिकल एक्टिविटी वाज ग्रेटर इन proportion to the sugar we used to have. And sugar हम कब खाते थे? ये हुँ, हलवा हुआ, लड्डू हुआ, it was more of a occasional thing. इट वाज हाँ, नॉट लाइक कि एवरीडे मैं शुगर खा रही हूँ, और खाते भी थे तो हुँ, आप वो छोटा-सा लड्डू और समथिंग व्हिच इज़ अगेन होममेड. इट इज़ नॉट अ हुँ, प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं था जिसके अंदर देयर इज़ नो नो फाइबर, देयर इज़ नो प्रोटीन, इट इज़ जस्ट बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. सो दैट डिफाइन्स द रीज़न कि पहले में और अब में मीठा खाने में क्या डिफरेंस आ गया हाँ। है. या सो ओके। तो पूनम हाँ, फैटी लिवर
कि क्या साइंस होता है? मतलब क्या हमें पता चल सकता है कि हमें फैटी लिवर हो सकता है? कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए या साइलेंट होता है जब हम अपने एनुअल हेल्थ चेकअप में जाएँगे तभी पता चलेगा? यूजुअली इसके बहुत बड़े सिम्पटम्स नहीं होते until it has reached a very high level. But there हुँ, are certain red flags which you can start noticing. I mean, the हुँ, idea हुँ, is listening to your body. So when you have these, afternoon slumps, when you have this deep fatigue, मतलब सो के भी आप रेस्टफुल नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे हो तो भी आपको टायर्डनेस फील हो रही है, then there's a lot of bloating. Instead of eating light or clean, there's still a bloating in you. There is improper digestion. Then we can also say, especially in women, you would realize कि it comes in the forms of PMS, PCOS, acne. So ये सारे जो symptoms है, these are basically red flags for you to start understanding that your liver also needs the focus. Only working on a clean diet or gut is not completely healing you. So you have to support your liver in certain ways. Otherwise, आप अपने regular tests like liver enzymes, USG, sonography, when you go for your regular checkups, you would realize that there is some discrepancy in the functioning of the liver. ओके, तो एक तो हो गया कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हो, मीठा ज़्यादा खा रहे हो, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो फैटी लिवर हो सकता है। और भी Correct. कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें कंट्रीब्यूट करती है पूनम? Yes. So you know what? आजकल ट्रेंड हो गया है फ्रूट्स खाने का, बहुत सारे एक साथ फ्रूट्स खाने का. सो वी हुँ, ऑल हैव टू रियलाइज दैट फ्रूट्स हैव दिस नेचुरल शुगर along with the fiber, correct? The natural sugar is called fructose. Now what is हुँ, हुँ, happening, people are not realizing that they are having these fruits on empty stomach. When you have हाँ, empty stomach, they directly get absorbed into your bloodstream, raising your blood sugar and giving you the spikes. So हुँ, too much of fruits on an empty stomach is also leading to one of the factors leading to non-alcoholic fatty liver. हुँ, Okay, so हुँ, you have to keep in mind कि आप एक portion control में अपना fruit खाएंगे and always combine this fruit with some kind of nuts and seeds. Now you would ओके, ask me nuts and seeds का क्या combination है भाई fruits के साथ? So what हुँ, हुँ, happens is this nuts and seeds first goes in your stomach, creates a lining. It creates हुँ, a barrier. And when you put your fruit, so directly जो fructose it doesn't seep into your bloodstream and gives you a blood sugar spike. It doesn't give you blood sugar spike. हुँ, हुँ, So blood sugar regulation is the key to actually support your liver. ओके, Yeah. ओके, अंडरस्टूड। तो हमने फैटी लिवर के बारे में बात तो बहुत की है पूनम, बट एक चीज़ आई थिंक मैंने मिस कर दी ये पूछने में कि फैटी लिवर होने से हमारी बॉडी का लॉस क्या है? So when the liver is such important. मैंने आपको बताया कि liver is a multitasker. हुँ, Supposingly liver में ये fats accumulate हो गए. So the liver will go enlarged. It will have हुँ, हुँ, inflammation. So there are stages, stage 1, stage 2, stage 3 of the liver damage. So when you do not take care of your liver, you reach a stage where your liver is not repairable. And that is called liver inflammation cirrhosis. हुँ, हुँ। Yeah, so basically अगर liver ही damage हो गया, so how all the other parts of your body will function? ओके, हाँ, नाउ नाउ दिस साउंड्स स्कैरियर कि लिवर को थोड़ा The ज़्यादा wonderful part ध्यान about रखने की this ज़रूरत है। is that हाँ, this is reversible. If you take हाँ। care at the right time, because this is a lifestyle disorder, so you हुँ, can हुँ, always repair your liver because that's the only organ which repairs on itself. मतलब अगर हाँ, आपका when if you just give the exact love and the support to your liver with the right foods, it will just हुँ, replenish itself back. So don't let it go on to that stage जहाँ से हम उसको रिपेयर कर ही नहीं सकते. हाँ, ओके, मतलब पूरा खराब हो जाए उससे पहले ही जाग जाओ। तो Yes. उसमें आजकल एक ये बहुत चीज़ें चल रही हैं कि जूस क्लेंज़ कर लिया, डिटॉक्स टी पी लो, अ, इ इस तरीके की जो चीज़ें हैं, कोई सप्लीमेंट्स हैं, क्या ये सब हेल्प करता है फैटी लिवर को रिवर्स करने में, मैनेज करने में? So if you ask me on a scale of 10, I would हुँ, give it a 4. ओके। Yes, they work at certain point, but they are very short term relief things. So they work sometimes like diuretics, sometimes like laxative. So they definitely bring a little change, but that's not sustainable. For that, I would suggest कि आप अपने liver का every day में ध्यान रखें.
Not doing just expensive detox programs for 1 week or 15 days or 1 month makes any sense, because that's going to be a very short term relief to you, and it is not exactly bringing you at the point where the liver is functioning optimally. हाँ। ओके, तो फिर क्या करना चाहिए अपनी जैसे एक्टिव हो गए और लेकिन जो खाने की चीज़ें हैं उसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि लिवर थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ होता रहे? ओके, सो नाउ क्या होता है लिवर के, जैसे मैंने आपको फंक्शंस बताए, बाइल प्रोडक्शन होता है, देन हार्मोन का मेटाबोलाइज फंक्शनिंग होता है. सो वी हैव फूड कैटेगरीज व्हिच इज गोइंग टू सपोर्ट योर लिवर. So हुँ, हुँ। supposingly, when we are talking about increasing the bile production, because bile production is something which is actually going to digest your food. So the foods like vitamin C rich fruits, अपने जैसे grapefruit हुआ, lemon हुआ, orange हुआ, guava हुआ, so they act as antioxidants, and they in return helps in clearing your detox pathways of liver. So you must include lot of vitamin C rich foods, okay, to support your liver. Then you must include lot of B6, foods rich in B6, that is like avocados, chickpeas, lentils. So they helps in methylation. That means the DNA is going through a process where you are attaching a good group of DNA to it. So हुँ, it will not activate to the bad diseases. It will keep you protected. हुँ, हुँ, Then you need to add lot of bitters to your food. आजकल हम bitters खाते ही नहीं है. So bitters as in करेला हुआ, मेथी हुआ, daffodil root हुआ, arugula हुआ, ginger हुआ. बेसिक घर में सबके जिंजर मिलता है. सब फैंसी भी छोड़ दो तो you can always have this one coin size ginger sprinkled with Celtic salt or Himalayan pink salt and chew it before your dinners and meals, or any meals, lunch or dinner. हुँ, हुँ। That stimulates your bile production, supports your liver. So I think these are the tiny things we should start including for supporting our liver. ओके, Then we have जिंजर वाला beetroot. मैं करती हूँ। ओके, जस्ट दैट वन थिंग मतलब मैं अलग से Without नमक नहीं लगाती हूँ, मुझे बचपन से ना खाने के साथ अदरक खाने की आदत है, मम्मी देती थी। तो correct, हम correct. लोग ना जैसे अचार खाते हैं लोग, उसकी जगह हाँ, मैं एक छोटा-सा जिंजर का पीस ले लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उस तरीके से खाती हूँ। तो डज़ दैट हेल्प आल्सो ना उसमें नमक लगाना yes, ज़रूरी है yes. क्या? नहीं, नमक लगाना ज़रूरी नहीं है. Celtic salt is again very supportive for the liver. अगर आप अ, लगाते हैं तो again it helps in clearing the toxins, supporting the pathways. It's again हुँ, stimulating your bile production. So yeah, these are the basic ओके, यू things. वर आप सेइंग beetroot समथिंग include करें. Yeah, I was हाँ, हाँ, talking about beetroots. So हाँ, beetroots have these components called betalains, which is ओके। again very helpful in clearing the toxins from your liver. So you should हुँ, try हुँ, and including beets. अगर आपको कच्चा नहीं सूट होता है तो आप उसको steam करके खाएं. You know, so the bitters, beets, vitamin C rich fruits, lentils and chickpeas, nuts and seeds. That's a good fat again and B6 oriented. So these 4-5 categories of the foods are really helpful and supportive for your liver. ओके। तो चिकपीस होते हैं, उससे कई बार लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है और आप कह रहे हो कि लिवर अगर वीक है, तो उससे भी ब्लोटिंग हो सकती है, तो मतलब इसमें क्या कोई क्रॉस कनेक्शन है? So हाँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया everything works in the sink. So you हुँ, need to first work on your gut so that your gut is ready to absorb the nutrients from the food you are having, and then it goes to the liver for filtration. So now you need to first rectify कि अगर आपकी gut में dysbiosis है तो आप पहले उसका take care करें, and then you start having your foods which are going to be liver supportive. उसमें chickpeas and lentils आ जाता है. अभी जैसे lentils हैं तो उसका भी एक तरीका है prepare करने का. So if you soak your lentils 12 hours throughout the night and फिर आप उसका पानी निकाल के उसको राई, हींग, जीरा, तड़का, अनियन, गार्लिक का तड़का डाल के आप खा रहे हैं, so that dal will not create bloating to you. हुँ, And हुँ। at the same time, it's going to give you good benefits, what is needed for your gut as well as liver. हाँ, ओके, तो कोई भी दाल है, हमें हमेशा 12 घंटे सोक करनी चाहिए, लाइक मैं 1-2 घंटे के लिए सोक करती हूँ, इट्स नॉट इनफ कि पूरा रात सोक करो, उसके बाद मिनिमम 6 to 8 आवर्स करनी ही ओ चाहिए, एंड दाल का कंसेप्ट ये है कि जितनी बड़ी दाल, उतना ज़्यादा सोकिंग टाइम. So if it's हुँ, मूँग का हुँ। दाल, तुअर का दाल, चना, राजमा, so how हुँ, much हुँ। bigger your protein is, the more हुँ, should be your soaking time.
So if you have a Mhm. right soaking time, so it soaks out all the anti-nutrients present on these lentils, which creates difficulty in digestion. तो आप हुँ, सोक करके उस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे एंड फिर अच्छे तड़के के साथ, तड़का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा घी तेल डालना है, तड़का मतलब राई, जीरा, हींग, basically onion, garlic, that just makes it easier to digest. हुँ, हुँ। ओके, गॉट इट। तो पूनम, Yeah. मान लो किसी को अभी अर्ली स्टेज का डायग्नोज हुआ है फैटी लिवर, तो वो अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना शुरू कर सकते हैं जिससे कि अभी से मैनेज हो जाए, आगे खराब ना हो? Of course. So again, we're going to divide this into two things: lifestyle and the foods. So when हुँ, we talk about the lifestyle, definitely you have to create a lot of movement in your body. Please, movement doesn't mean कि सुबह आधा घंटा exercise कर ली तो हो गया. भाई, I am done हुँ, for the day. अब बाकी दिन I'm just going to sit through. That will not work. Believe me. So you हाँ, have to make ओके, sure that every hour या every 1.5 hour, 10 minutes के लिए आप उठो, walk करो, stretch करो. Like people, for office people. अभी मैं थोड़ी ऑफिस में चलूंगा और घूमूंगा, स्टफ लाइक, डू स्ट्रेचेस एट योर प्लेस, डू चेयर मूवमेंट्स, चेयर योगा जिसे हम कहते हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लेने का, फुट टैप्स, इट वर्क्स लाइक मिरेकल. सो हमारे काफ में हमारा सेकंड हार्ट होता है, जैसे हर चीज का सेकंड सेकंड होता है ना, हुँ, जैसे हुँ, गट, ब्रेन, लिवर, सेकंड ब्रेन वैसे ही होता our है। second heart is in the calf muscles. So if you have हाँ, heard about heel taps, सो हाँ, आप अपने पाँव को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे. सो इट हेल्प्स इन रेगुलाइजिंग द ब्लड शुगर हुँ, and हुँ, it also creates the movement at the same time. So these हुँ, simple doable hacks you have to do throughout the day so that there is a movement in your body. Secondly, हुँ, if you can go for infrared saunas or create that hot yoga environment, sweating. Sweating is important because it's one of the way of excreting the toxins. So you have to make sure that you move, you sweat, and you exercise. When you exercise, again, there are lymph movements, there are drainages, again, helping the liver to remove the toxins which have already built up in the body. So when you help that, the liver is not overwhelmed because हुँ, everything is functioning accordingly. हुँ, Sunlight. Please wake up. As soon as you wake up, within 15 minutes, go and have sunlight. अब sunlight टू रीजन हो सकते हैं, अगेन विटामिन D3 स्ट्रांग होता है हमारा. सेकेंडली, जब आप सनलाइट लेते हैं, सो योर बॉडी मूव्स इनटू अ सिकार्डियन रिदम. हुँ, दिस इज द टाइम आई हैव टू वेक अप. योर बॉडी, योर बायोलॉजिकल क्लॉक स्टार्ट्स मूविंग कि अभी मुझे खाना है, विद द सनलाइट मुझे खाना है, शाम को मुझे विद द सनलाइट आई हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ फूड आई एम ईटिंग. Again, so you have to really work with the circadian rhythm, and you have to make sure that you're having early dinners. Now, why early dinners? Again, because your stomach needs time to digest food. And have you ever had these wake up calls between 1 to 3 a.m.? I'm sorry, I'm just getting in between and asking you a question for this, but have you ever felt so? Or any of your relatives हाँ, or any of इट friends कि यार इट 3 बजे मस्ट हैव उठना है, तो हैपेंड, नींद लाइक, ही नहीं आ रही है, नहीं, नींद 2 तो आ बजे भूख जाती है, लगी. लेकिन हाँ, समटाइम्स आई हैव टू पी, मतलब इट यूज्ड टू हैपन वेरी रेयरली, बट अभी थैंकफुली नहीं हो रहा है मोस्टली, बट या आई थिंक इट हैज़ हैपेंड। So a lot of people wake up between 1 to 3 a.m. These are the wake ओके। up calls they get, and this is because the liver is overworked. It's highly active. हुँ, So हमारी बॉडी में भी ना हर ऑर्गन का एक टाइमलाइन होती है टू फंक्शन एंड टू डिटॉक्सिफाई. सो लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन टाइम है रात को 1 बजे से लेके 3 बजे तक. So if ओके। your liver is highly active, you're going to get wake up calls. So हुँ, make sure that you have right sunlight in the morning, you eat your early dinners, you do not snack in midnight so that your liver is being supported and loved. So this is about the physical activities what हुँ, we are talking, the lifestyle changes we need to bring in when we talk about how I can support my liver. Okay, हुँ, and then when we talk about foods, as I just spoke to you, so you have to have blood sugar balancing foods. Again, nuts, good fats, nuts and seeds खाने के लिए. उसके बाद have your vitamin C rich foods, have your B6 oriented food, have your cruciferous vegetables like broccoli and cauliflower. They're full of choline, which again helps in removing the metal toxicity from your body. हुँ, हुँ, Onions and garlics because they have sulfur, binding with the toxins and helping to remove from your liver. Then you should have your fermented vegetables,
lot of fiber. It's little overwhelming when you listen to so many things, but once you put it into a place, it's not that difficult. It's what we have been doing since ancient time. It's just that now we have started bifurcation कि ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे, इसका टाइम है और इसका टाइम नहीं है. Just sit with हाँ। a balanced meal and you will realize everything is there in your plate. हाँ, ये तो है, जो अपना नॉर्मल डे टू डे खाना होता है उसमें सब कुछ होता है। बस ये है Yes, कि हम उसको भूल absolutely. गए हैं और हाँ, हमने बताया ना कन्वीनियंस बिकॉज़ पे ऑफ ज़्यादा आ गए हैं। टाइम्स एंड कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने उसको छोड़ दिया है। अच्छा हाँ, ठीक है, आज सिर्फ़ चावल बना लेते हैं, 1 पॉट राइस, दाल छोड़ देते हैं। या हाँ, आज हमारा महाराष्ट्रीयन थाली बन रहा है, तो उसमें से अरे ये वाला सब्ज़ी निकाल देते हैं, टाइम नहीं है बस वी आर जस्ट गोइंग टू मेक पूरन पूरी एंड कट ऐसा कुछ बना लिया। बट वी डोंट हाँ। रियलाइज़ दैट व्हेन देयर इज़ अ फुल मील जहाँ छाछ है, जहाँ पे आपके सैलड्स है कुचुम्बर स्टाइल में, कि आपका वो पूरन पूरी के साथ ऊपर जब आप घी डाल के खाते हैं, तो आप क्यों डाल के खाते हैं, Because हुँ, it's so हुँ, much of chane ka dal in हुँ, it. To make it more digestible, to make it more absorbable, you make sure that you add a lot of ghee to it. So everything is in a combination, which we forget. हुँ, हुँ। ओके। और पूनम, वर्कआउट की आपने बात की तो क्या ये 10 के स्टेप्स करना, लाइक क्योंकि थ्रू आउट द डे मूवमेंट हो रहा है, तो ये 10 के स्टेप्स करना ज़रूरी है या फिर अगर आप थोड़ा-थोड़ा मूव कर रहे हो तो चल जाता है? See, 10K हमने टारगेट यूजुअली हेल्थ वर्ल्ड ने इसलिए बना दिया है फॉर पीपल टू कीप देम मोटिवेटेड टू मूव. So हुँ, for me, with a half an hour of exercise and good movement of 6 to 7,000 steps is good enough. That is what हुँ, my target is. And ओके। अगर 6 to 7,000 steps नहीं भी होते तो I make sure that I do some squats during the day because it also helps in blood sugar regulation. तो ज़रूरी नहीं कि मुझे 10K ही करना है. I'll find my ways suitable to my body, suitable to my culture and environment. अगर मेरा हुँ, सिटिंग जॉब है तो I make sure that I do calf raises. So I हुँ, find the niches where I can create a movement to a body. 10K is just a benchmark created so that you keep yourself motivated to हुँ, move. But it is not like a compulsion कि आपने 10K किया है तो आप हेल्दी हैं. That's हाँ, not हाँ, the criteria. ओके, मतलब आपको बस मूव करना ज़रूरी है, 6-7 हज़ार स्टेप्स भी हो रहे हैं तो इट इज़ ओके, Yeah, बट yeah. कीप मूविंग। ये ऐसा भी नहीं है कि एक बार में 6-7 किलोमीटर चल लिया, हो गया तो दैट इज़ गुड। No, no. As थ्रू I आउट said द कि डे थोड़ा-थोड़ा। entire हाँ, day में you have to keep moving or stretching or just create some motion in your body. हाँ, हाँ। ओके, वॉव! तो बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है हमें फैटी लिवर के बारे में, और लिवर से ही रिलेटेड अगर एक और टॉपिक की बात करें तो वो है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी भी मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि इंडिया में काफ़ी कॉमन है। तो अगर सिर्फ़ हेपेटाइटिस बी डिज़ीज़ की बात नहीं करना चाह रही हूँ मैं करना चाह रही हूँ अबाउट कैरिंग द हेपेटाइटिस बी एंटीजन, लाइक यू आर अ कैरियर, आपको डिज़ीज़ नहीं है, तो इसका क्या मतलब है आपके लिए और आपके आस-पास के लोगों के लिए? इसका ये मतलब है कि you are carrying that हुँ, bacteria or infection within you, but it doesn't mean it's active. हुँ, Okay. So you do not really have to worry about it until it becomes active. हुँ, हुँ, So, active now again, as we've already spoken, what can lead to this bacteria becoming active is again the food you are intaking, the lifestyle you are living, the alcohol intake you have. So, if you take care of all these parts, the food, the lifestyle, and the stimulators like excess of alcohol or tobacco or smoking, so until you are taking care of these things, you do not need to worry about hepatitis B. ओके, तो अगर लिवर वीक हो रहा है तो इट कैन गेट एक्टिवेटेड। Yes, yes, of course, because all हुँ, these things are related to हुँ, liver. तो हुँ, आप liver का ध्यान रखेंगे, support करेंगे, so this gene or this parasite or this bacteria, whatever you want to call it, is not getting active. So you have to make हाँ। sure that you have a good liver support so that this doesn't become active and creates problem for you. ओके, गॉट इट। ठीक है। Yeah. और पूनम, फिर बिकॉज़ नाउ वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द एपिसोड, तो एक तो आपने बताया कि खाना अच्छा लेना चाहिए, सप्लीमेंट्स थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली किसी एक्सपर्ट के Food गाइडेंस में first. ही लो, Yes. ऐसा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर लिवर लविंग की बात करें, जो अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, तो वन हैबिट व्हिच वी कैन स्टार्ट टुडे, मतलब
छोटी हैबिट हो, ऐसा नहीं हो कि लोगों से अगर बोल दो कि आज ही से आपको 6000 स्टेप्स चलने हैं, तो दे विल बी लाइक भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर रही, इट्स ओके। तो कुछ छोटा-सा जो हम अभी शुरू कर सकते हैं, लिटिल फिक्सेस फॉर कैन द आई लॉन्ग शेयर टर्म। 3 हाँ, लिटिल वन? येस, वेरी येस, 3 डूएबल है, लिटिल बिकॉज़ फिक्सेस। एक ओके, में थोड़ा-सा डिफिकल्ट है मेरे को चूज़ करना। ओके, Okay, ओके, first ओके। thing I would request all your audience to start having their early dinners. हुँ, हुँ। अर्ली Okay, डिनर मतलब because कितने बजे? I would say somewhere around 7, ओके। last 7:30, because I would actually say with the sunlight, when the sunlight goes down, but it's not practical for so many people who are working हुँ, around. हुँ, So make sure that you have your heavy dinner meal before 7. ओके। कुछ लोग 5 बजे स्नैकिंग करते हैं, साढ़े 5-6 बजे। सो देन मेक इट एज़ अ like a dinner थिंग for yourself so that you don't have to eat later in the night. हुँ, हुँ, Okay, so start ओके। doing early dinners. Secondly, start moving. As I told you, आप 10K टारगेट ना रखें. Just make sure that you move your body every 1 hour. Every 1 hour 5 मिनट वॉक कर ली, every 1 hour थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया, every 1 hour काफ रेज़ कर लिया. मुझे स्क्वाटिंग अच्छा लगता है, तो मैंने 5 स्क्वाट्स मार लिए. Anything. These are basically called exercise snacks. So please हुँ, snack on the exercise, don't snack on the food. हाँ, बेटर आइडिया। This is very doable. This is very, very doable. बस it is just that you have to set the priority कि बस मुझे 2 मिनट ये काम करना है या 5 मिनट मुझे ये काम करना है. So हुँ, second is please move your body. And thirdly is you can start doing castor oil packs. ओके। They are not very overwhelming. Once or हुँ, twice a week, start. Just apply the castor oil in your liver area. Put a हुँ, cloth, wrap around a cloth over there, and leave it for hours. ये आप रात को सोते टाइम भी कर सकते हैं या दिन में इफ यू आर हुँ, वर्किंग लाइक इफ यू आर अ होम मेकर सो आपका रूटीन खत्म हुआ आपने लिवर पैक लगा लिया एंड यू लीव इट एंड यू कैन जस्ट कंटिन्यू डूइंग योर regular work. So what does हुँ, this do is that again the castor oil has a component which absorbs in your skin very fast, and हुँ, then it leads to help you in reducing the inflammation which has come into your liver. ओके। Okay, so this is हुँ, something. बस एक बार रिसोर्सेज आपको कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज यूजुअली कैस्टर ऑयल एंड वो कपड़ा एंड चिकना दिस अ माइंडसेट इज लिटिल डिफरेंट व्हेन यू हाँ, टॉक हाँ, अबाउट हाँ, कैस्टर ऑयल, हाँ। बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बिलीव मी. The right cloth, एक पुराना टी-शर्ट and just the great good castor oil which is not like you have to make sure that hexagon free आप अच्छी जगह से source करो, whether you want हुँ, to take it from cold pressed chakki next to you or you want to order online. Just do castor oil packs. आप उस पे for 10 to 15 minutes you can also put a hot compress over that so that हुँ, you know the oil get absorbed fast in the liver area and it starts working by reducing the हुँ। inflammation and increasing your bile production. ओके, तो So बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मतलब नहीं. Just take कि a वो आपका handful, rub it on your liver हुँ, area. Just put a हाँ। cloth. Cloth क्यों? Because हुँ। it's going to stain otherwise everywhere and अच्छा, anywhere अगर you're going मान to लीजिए put it. आपने कोई पुरानी Just टी-शर्ट wrap it. पहन ली, आपको स्टेनिंग की टेंशन नहीं है, तो क्लॉथ हाँ, लगाना ज़रूरी है या नहीं है? क्लॉथ लगाना इसलिए ज़रूरी है because we हुँ, want that oil to be absorbed in that area. अभी ओह! आपने लगा लिया, आपने टी-शर्ट पहना, but maybe it's rubbing everywhere else and the oil is just spread हुँ, to हुँ, 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 the हुँ। focus खत्म हो जाएगा. ऐसा हाँ, नहीं कि वो उसको आपको हार्म अपनी जगह करेगा, पे रखने any के part of लिए। the body. Yeah. Just to make sure that it really goes into the liver area, you make sure that you put some kind of a wrap over there, and then wear any t-shirt or anything you like to. ओके, तो इसको रात में लगा के सो भी सकते हैं कि 15 मिनट Yes. बाद हटा देना चाहिए? No, you can sleep overnight with this, and if you don't have time, you feel eeksy or you just don't want to do it for a longer period of a time, just apply for 20 minutes, have a hot compress so that it absorbs. हुँ। Good to go. I love castor ओह! oil packs. Yeah. ओके, ओके। कैस्टर ऑयल मुझे याद है कि ये आई थिंक आईब्रो या आईलैशेज़ की ग्रोथ के लिए किसी के लिए तो लोग यूज़ करते थे, बट आई थिंक ये बेटर Yeah. यूज़ है। Yeah, yeah, yeah. In fact, castor oil have many, many uses, but when we are talking specific to liver, let's just stick to हाँ, liver right now. And येस। I just forgot in the conversation, I think people would really relate to this. अगर आपको dark circles हैं, आपको हुँ, anger issues हैं, तो make हुँ। sure that you support your liver because they are coming from your हाँ, इनफैक्ट पता है liver. मेरी डॉटर 3rd ग्रेड में उसको पढ़ाया गया है। आई वाज़ Yeah. शॉक्ड टू सी कि ये तो यार हम लोग को 12th में ग्रेजुएशन में मैंने पूरी बायो पढ़ी है, मैंने कभी नहीं पढ़ा, उसके यहाँ ये पढ़ाया गया है कि
कौन सा ऑर्गन किस इमोशन से कनेक्टेड है. आई वाज वेरी Of हैप्पी टू course. सी हर बुक. Yes, yes. So that's what I'm saying. If you have a lot of mood swings, you have anger issues, please focus on your liver. Do liver support foods, do activities through this. ओके. ओके, देन आई विल डेफिनेटली डू इट. मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है. माय हस्बैंड सेज आई एम वेरी वोलेटाइल. आई थिंक थोड़ी वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा. ओके पूनम, मुझे ना आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. चीज़ें पता चली जो मेरे लिसनर्स को आई एम श्योर बहुत हेल्प करेंगी, बिकॉज़ आई हैड गॉट ऑल ऑफ दीज़ क्वेश्चन्स. मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ा इस एपिसोड के लिए. आई वाज़ लाइक कि सब लोग Oh, अपने-अपने क्वेश्चन भेज रहे हैं. आई एम डन, आई एम रेडी विद एवरीथिंग. एंड नाउ पूनम, इफ दे वांट टू कनेक्ट विद यू, तो कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकती हैं, हमें बताइए. of course. So you can visit my Instagram, that is Poonam_Kasat. I think you'll be able to help them Yes, with yes, the I'll link. link it. And you can visit my website, poonamkasat.com. All my, I'm very, very available on my website as well as on Instagram. Just DM me, book a discovery call. A discovery call is where we just understand each other, my approach, your issues, and we can start the plan what suits you the best. My approach is very, very bio individual according to you, your routine, your culture, your health goals, your age appropriate. So we just work on your gut and your liver and on your sleep, movement, and emotional well being, because as I told you, everything is very well Hmm. connected. So please feel free to just get in touch with me. I do more of a doable stuff than a dreadful stuff. Hmm. I'm there to support you. That's all I can say. Perfect, perfect. Thank you so much, Poonam, for enlightening us, for helping us today, and thank you for giving your time to Little Fixes. Thank you so much, Maitri.